first of all, a very warm welcome to the final and what we would like to call the valedictory session of this 12-part series, Police and You. 3 months has been a really long time to keep a series going week after week, and I think it's a terrific response that we've got from all of you that encouraged us to seek the help of Mr. Gautam Thakur to get this fabulous auditorium. We had no idea it is so lovely when we asked him for it, but we just needed a bigger space. And it's been a bonus that it is so wonderful and the people have been really nice, and I think everyone's very, very happy with the experience of having these programs here. But all good things have come to an end. So we are happy that we have a great session to close it. So it's been a lot of hard work, a lot of tension at times, heavy rains like again today, speakers falling ill, cancelling, bereavements, but I think we've managed to pull it off, right? Those of you who have attended all the 12 weeks know it's wouldn't have happened, of course, without the wonderful support that we got from Dolphy D'Souza, convener of Police Reform Watch, and his entire team. Big hand to them. We wouldn't even have known what subjects to do for the 12 parts. It's all thanks to Dolphy that this has happened. And of course, lots of thank yous to various people to make a success out of this. But I'm going to keep that to the end. We have half an hour extra today just for that. So before that we start today's program, we're going to finish at 5:30. My only request to you is do wait till the very end. Many of you are going to get participation certificates. So wait till we finish. One particular thank you I don't want to delay. Where is Kavita Bendre? One of the fascinating things that's happened doing these programs here is I'm a great watcher for how you get treated when you come to an organization. And so many people have come back to me and said, everybody at Saraswat Bank, right from the people, the security at the door who greets you and says hello, have been so incredibly polite and good. I think it's a hallmark of a wonderful organization, because the culture that starts at the top has to go right to the bottom. And when we manage to see that happening for 3 months, I think it's really incredible. All of us have been quite in awe of it, and I as a journalist do go around meeting a lot of really top organizations, and I've never seen anything like this. So we have a big hand to all of them. So we have Miss Kavita Bendre, who is in charge of all these facilities, and we wanted to give her a little token of appreciation, and I thought she was here. She's been quietly running in and out and watching that things happen as they should, but I guess I will not delay it anymore and wait for her to come, and I will start with today's program. If you all are wondering what happened to the chief guests, then Pradnya Sarvade is on her way. She is coming. Unfortunately, Mr. Gautam Thakur is not going to be able to join us. He's had to rush off to Calcutta. But his CGM, Mr. Ajay Jain, is going to be here. They'll join us shortly. So let's start with today's topic, Anti-Corruption Bureau, and learn how it functions. I, have the pleasure of inviting Mr. Vilas Tupe. He's back again. The first and the last in the police series is going to be done by him. Mr. Tupe, may I invite you on stage, please? A big hand for him. May I request Dolphy D'Souza to welcome Mr. Tupe with a bouquet of flowers. Mr. Vilas Tupe is a highly regarded police officer. He's a former Assistant Commissioner of Police. In his career spanning 4 decades, he has spent long years in the crime branch and the Anti-Corruption Bureau. He was awarded the President's Police Medal 2 times, in 92 and in 99. He joined the police force in 1973 as a sub-inspector and retired as an ACP in 2009. He's done a lot of police-related work after that. He was just telling us he's completed his LLB. He's done a program in cyber forensics, cybercrime, and I think he's still at it, still learning. Besides heading several important police stations in Mumbai, he spent 10 years, the really longest stint where a lot of changes happen at the Anti-Corruption Bureau, and that's why we have requested him to be a speaker again for today's program.
And it was at that time that the Bureau was very, very active, even in terms, and Pradnya Sarvade was actually the DCP at that time. That's why we have her here as our chief guest today. And a lot of changes happened, including the outreach that the Bureau started doing with the public to encourage people. They've also changed some systems, but I think you're going to hear more of it from Mr. Tupe and from Dr. Sarvade when she comes in. The ACB, as we all know, goes through ups and downs. There are lots of people who have different kinds of experiences depending on who is around and what they do. We at Moneylife Foundation like to choose the best. So that's what we have here in Mr. Tupe. With these few words, I hand over the mic to him. Good evening. Thank you very much for giving me opportunity again. Today is a very sensitive topic, anti-corruption. Before starting my lecture, I want to ask one question to members. Whether anybody here present who has not paid a single rupee bribe to the public servant till this date? Very good. I highly appreciate their attitude for not paying the bribe. And what is the trouble of? There is a beautiful sentence of Mahatma Gandhi. On this earth, there is enough for everyone's needs, but not for their greed. Money is something, not everything. Before going to topic anti-corruption, I would like to give history of the anti-corruption laws. Before 1947, there was no Prevention of Corruption Act. In India, the act is known as a Prevention of Corruption Act, but it is not a Prohibition Corruption Act, because government also know it cannot be prohibited, and these corruption activities were there, are there, and will be there. Before 1947, the corruption was there since ancient period, but the Indian Penal Code, Lord Macaulay has enacted in 1860. In that provision, section 165, 161 to 165 were made. In those days, only top government officials were Britishers only, East India Company, and now we are calling our SPs DCPs, but those days there were sergeants. So while enacting the law, they had seen that they will not be punished in that way. So the sections were like that, and punishment was less, and accused were also of subordinate category. After Second World War, when the public servants were deputed for giving the material to the site at the World War, our public servants from India have sent, instead of sending ammunition, foods, and etc., they have sent some material in like wooden bhusa वगैरह ऐसा कुछ भेजा उन्होंने. So that time government has enacted a law, Criminal Law Ordinance 1944. Then this Prevention of Corruption Act was amended in 1988. Earlier punishment was only for 5 years to 7 years. Now as per new rule, the punishment is up to 10 years. Now we will see the sections of Prevention of Corruption Act. It is a in India there are 10,000 minor acts, and there are only 3 major acts: Indian Penal Code, Indian Evidence Act, and Criminal Procedure Code. The Prevention Corruption Act, there are only 30 sections. Section 7
Before elaborating the sections, I would like to show you video. जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो. ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का. ज्या सामाजिकतामध्ये काम करत होतो तेथे बदनामी, आत्मसन्मान कमी झाल्याने शरीर प्रकृतीवर परिणाम, मानसिक स्वास्थ्य बिघडले. This is a filmy trap. The procedure is quite different, but you can get the idea how the public servant was trapped. In government of Maharashtra, there are 32 departments. Out of that, these 10 departments are more corrupt. Number 1 is now revenue department. Number 2, land departments, registration, and fourth is police and home department, and all that. In every year, there are only 40 to 50 traps. Population of Mumbai is 1.5 crore maybe at this stage, but only 50% average are lodging the trap cases. Generally, public doesn't want to go against the system, and they are scared, they are afraid of revenge, etc., and they are not coming forward to lodge the complaint. And everybody wants to get his work done early, so sometimes people also offer bribe and they get the work done. Now we will go to the sections. Section 7 is the demand of bribe. What is a bribe? Bribe means public servant asking for illegal gratification. If Arun Gowdi's gangsters are demanding bribe, that is not called as a bribe, that is extortion. Only public servant, those who get this salary from government, public sectors, and some education institutes, etc., they give, whoever gets money from government, they are called as a public servant. The detailed definition of a public servant is mentioned in 21 of the Indian Penal Code. Only those persons are included in the Prevention of Corruption Act. Now, Prevention of Corruption Act, public doesn't know how to lodge the complaint. It is a usual procedure when you go to the police station and you are lodging FIR, and usual story, they are tossing and they are not recording and registering your complaint. But here in anti-corruption, you are most welcome. Complaint there. Nobody go there to lodge a complaint. Here in anti-corruption, you will be welcome. Please lodge the complaint. Now I will give one illustration. One hotel keeper from Vikhroli came in 2006 to lodge a complaint. He was asked to tell, he was कल सांगितले कि कैसा हुआ, क्या हुआ, कैसा डिमांड हो गया. उसने बोला सर मैं लाइसेंस रिन्यू करने के लिए गया था, तो मुझे उधर का जो एन वार्ड का लाइसेंसिंग इशूइंग इंस्पेक्टर है, उसने मुझे 20,000 ब्राइब डिमांड किया. तो we have told him the procedure, how trap is laid and everything. Then he asked what action will be taken. He will be arrested, he will be remanded to the court, and after the investigation, charge sheet will be submitted, and lastly, after the trial, he will be convicted. But your role is important. You have to come to the court. As soon as he heard the word court, no, I don't want to lodge the complaint. He straightway left the office of Sarvodaya Madam and started walking. Madam asked me, chase him and catch him again. Then I went him. He was again brought before Madam. Then we have convinced him. Let's see, you have come to lodge a complaint against licensing authority. He is not demanding bribe to you only. He must be demanding bribe to all the hotel keepers or all people who requires license. So why you are not? You become their leader, and if you tap that fellow, other people will not require to pay the bribe. Then we recorded his complaint. We have laid a trap at Yanwad Ghatkopar. He was trapped. After his trap, he was suspended, and that during that period, all hotel owners in that area got their license free, and some of the hotel keepers telephone us, बोले सर अच्छा कि आपने ट्रैप किया उसको, ये साल हमको 20,000 भरना नहीं पड़ा. So like that,
somebody has to come and complain and trap these fellows. Now, earlier section 7, अगर हम लोग ट्रैप लगाते थे, सेक्शन 7 का मतलब है डिमांडिंग ऑफ ब्राइब. आप बोलेंगे वो डिमांड कर रहे हैं तो पुलिस विल नॉट ले ट्रैप. एंटी करप्शन विल वेरीफाई दैट कंप्लेंट फर्स्ट, whether that public servant is really demanding or not. For that purpose, we go for forensic techniques. The complainant is asked to contact that public servant कि सर मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है, मैं कल नहीं आ सकता हूँ, जरा कम करो. And we record his demand in the tape, and after confirming that he has demanded the money, we lay a trap. In earlier, sometime demand was there, we laid a trap, but due to certain reason, trap was not succeeded, and then the matter was sent for department inquiry. But when madam came, she told that section 7 itself is offense, demand of bribe. Whatever cases are there, section 7, you send the charge sheet. And after that, even only on demand charge sheet was submitted. If a public servant for showing some favor or disfavor, if he is demanding bribe, the punishment is not less than 5 years. And now amended, it is 10 years. Only demand is offense, but when we are laying a trap and arresting that person, the public servant is abusing his position and misusing his powers and is demanding the bribe. In fact, he is getting the salary from government. He is getting salary from the money you pay by way of taxes. He is not supposed to pay single paisa bribe. But you know, everybody is after money and everybody wants money. And without money, I think they will not survive like that public servant are behaving. Now this section 7 ची मैं अभी केस बोल रहा हूँ आपको सेक्शन 7 के बारे में, हाउ ट्रैप फेल्ड. एक पुलिस ऑफिसर ने डिमांड किया एक शॉपकीपर को, मुझे 10,000 रुपये चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा. देन ट्रैप वाज, हिज डिमांड वाज recorded. Next day, trap was laid. The officer who laid the trap was a mischievous. He was given instruction. The procedure is the complainant and punch witness go ahead. They contact public servant and they say कि I have brought the bribe. And unless he is demanding, money is not given. As soon as money is taken, then that complaint comes out, gives signal, then raiding party goes and arrests that fellow. But in this particular case, the officer himself went ahead and exposed himself, and that trap was not succeeded. That officer was later on punished by madam under section 7. Now section 8 is demand of bribe by the public. There are some touts and agents, they visit police station, they make friendly with them, police officer, BMC officials, public servants, and they ask public, you pay bribe to me, I will convince that officer and your work will be done. बहुत टाइम वो पब्लिक सर्वेंट को मालूम भी नहीं था कि ये आदमी अपने on behalf of us he is taking bribe. Whenever such bribe is demanded by public, that person is arrested under section 8. And during the investigation, if involvement of public servant is there, then we apply section 9 and we arrest public servant also if we get some evidence. Section 8 and 9, the punishment section is 10, punishment is not less than 5 years, 3 years. Then we come to section 11. All persons, they are not demanding cash. Some person, they want some favor, like give me watch, give me TV, and all things, articles and things. For that there is separate section, valuable thing, section 11. Section 11, I will tell one story. There was one deputy secretary sports. During this Ram Leela program, the permission is required to put pandal and that all shoe.
One complainant from Nakpada went to the Deputy Secretary Sports and I've submitted an application. सर मुझे ये पेंडॉल लगाने का और ये प्रोग्राम करने का 10 दिन का परमिशन चाहिए. The public servant told him, you pay me minimum 25,000 and or you give me air conditioner. That complainant did not agree. Then the public servant told, okay, you give me only air conditioner. Then he reluctantly agreed. The complainant was mischievous. He went to media. He contacted one star TV crime reporter and they had a sting operation. The reporter and complainant went to that sportsman and the complainant gave him 15,000. He was asked to count that money. That sport officer, deputy secretary counted that money. It was nicely recorded. Then they went away. After 5 minutes, that complaint again came. सर आपने तो 25,000 मांगा था, 15,000 रुपये ले रहे, हमको 10 मिनट के बाद आप देते और 15,000 वापिस दे. And he took that money back and went away. In the evening, he did not turn up and his sting operation was viewed by entire world on Star TV. Then bureaucrats and Mantralaya officials, everybody has seen that and they directed our DG, you take action on this. Now there is no complaint before us, now how to take action. But it was a test case and I was asked to collect that CD. I went to Star TV and requested them to give me the CD. They refused. Then I gave notice under section 91 CRPC. You are, by law, you are supposed to obey the order and give the CD. After consultation with their law department, they finally produced the CD. Then I became the complainant and that we have raided the house of that sports officer. He was staying at Pune. When I caught him at his house at Pune, we have taken house search. सर बोले मैं पैसा मांगा ठीक है, मैं सब लोगों ने देखा मुझे पैसा लेते वक्त, लेकिन वो पैसा तो वापस लेके गया. अभी केस क्या बना रहे आप? मतलब टेकिंग वैल्यूएबल थिंग इज ऑफेंस. आपने जो पैसे और वो आपने जो डिमांड किया है एयर कंडीशन का, उसके बारे में हम आपके ऊपर प्रोसिक्यूट करने वाले. देन फाइनली दैट मैटर वेंट टू कोर्ट. द कंप्लेनेंट एज यूजुअल टर्न हॉस्टाइल and that person was acquitted. It's a case of section 11. Now section 12 means offering bribe. Here public servant, if you go to the public servant and you want to get your work done legally, illegally, then you complainant offers, you as a citizen offers bribe to do this work urgently. The public servant अगर नॉन करप्ट है तो बोलेगा मुझे पैसा नहीं चाहिए, I will do your job. But sometimes complainant wants some illegal favor, so he offers a bribe. Now I will tell one incident about this section 12. At the Azad Maidan police station, one inspector Jan Rao was there. He was investigating a case which was referred by the court under section 156(3). Court has ordered him to register the case and investigate. The complainant was one Gutka king and the accused was another Gutka king. And investigation was going. Both were करोड़पति. During the course of investigation, accused approached him. साहब आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन? वो ओरिजिनल पेपर उसने जो दिया है, आप वो डिस्ट्रॉय करो. द पब्लिक सर्वेंट ने बोला डिस्ट्रॉय करो, मेरा नौकरी जाएगा तुम्हारा इसके लिए. एंड आई विल गिव 5 lakhs, you please destroy it. The public servant refused to destroy the paper. Then he brought one ACP. Unfortunately, he was my batchmate. Then the ACP went to that inspector and offered him 1 more lakh. बोले इसका काम, मैं रेलवे में काम करता हूँ, आप वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आप ट्रेन में से निकलो, ऐसे आपकी एफआईआर लेता हो, और वो बैग आप भूल गए या मिसिंग हो गए या कोई स्नैच करके ऐसे कंप्लेंट लेता हो, आपके ऊपर कुछ नहीं आएगा. तो फॉर destroying of that evidence and documents, they were offering 5 lakhs. The officer came to Anti-Corruption Bureau, he met and Pradnya Sarode ordered us to lay a trap. We went to Azad Maidan police station where that Gutka king came along with his 2 associates, and after handing over that 5 lakhs by him to the public servant, we have arrested him. This is the case of offering bribe. Now section 30 is a criminal misconduct.
criminal misconduct means 13(1)(a) and 1(b) is a habitual corrupt. जो लोग हमेशा ब्राइब मांगते हैं उनके लिए वो सेक्शन है, habitually accepting the bribe. And 13(1)(b) habitually accepting the things, valuable things. Now most important is section 13C. What is section 13C? It's a criminal misconduct. The public servant who is interested with the government property, he used for his own use. Now there is a glaring example nowadays. Our then Deputy Chief Minister is in jail. You know the case. It has come in media. That is under 13(1)(c). I am investigating one 13(1)(c) case, and till today I am attending that court. It is a film. It is not here. The film city scam in Chitranagari, Dada Saheb Phalke at Goregaon. Then MD and their chief finance officer, they have misappropriated 12 crores and 70 lakhs rupees amount from the film city. The film city had raised a bond of 20 crores. The amount was kept in a FD. The MD along with the finance officer and one private person, they decided to hold a program, and they approached minister. Minister agreed, as their condition was only film city will get 25 lakhs as a charges, coordination charges, and rest of the money will be spent by that public who is so-called film producer. But that film producer so-called was a ordinary person. He was not having single money. If that program which they were conduct Hum Ek was to be telecasted in 5 cities of India, and from that program 25 crores revenue was to be generated, and government was to get as per agreement 25 lakhs, and 24 lakhs they wanted to share among themselves, but they could not succeed. There was earthquake on that day. There was no advertisement, and they had broken the FD, and they could not, म्हणजे गवर्नमेंट के तिजोरी से पैसा निकालने का चुपचाप और वापस भरने का वो उनका पैन फंस हो गया. दैट इज अ क्रिमिनल मिसकंडक्ट केस. 13(1)(d) is a trap by corrupt or illegal means obtained for himself or any other person any evil thing. Now I will there are so many trap cases, interesting trap case, but I will tell one challenging trap case. One public servant attached to Dharavi police station. He was in charge of Dharavi Shahunagar beat chowki. He asked bribe to the complainant. Complainant did not agree. Then he started harassing that fellow and बोला तुमको पैसा देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारा काम नहीं करेगा. The complainant unknowingly बोल के गया कि सर मैं एंटी करप्शन में जाके कंप्लेंट करेगा. तो बोला क्या करने का, एंटी करप्शन क्या, उसका बाप का कंप्लेंट करूँ, मैं पैसा लूंगा ही. It was a challenging trap. So 3-4 times trap was laid, trap was not succeeded, because that topography of the chowki was, there were buildings and the chowki was in between, and as soon as he could see from chowki that people are coming from front side, this side, so he used to get alert कि सामने से कोई तो भी आ रहा है अभी इसके सामने. Trap was not successful. I was in the court on one fine Saturday. My DCP called me, well, this is a challenging case, 3 times this trap is failed. Now you work out this. Yes sir. You give me a complete new team. My team, नया टीम लिया. माहिम वो बाजू अदर साइड गाड़ी पार्क किया. Complainant and myself, punch witness and 2 constable, we went ahead. I had put मेरा शर्ट और पैंट उतार के मैंने ये टॉवेल लगाया और ब्रशिंग करते करते चौकी के दरवाजे में जाके बैठा. उसको कुछ मालूम नहीं पड़ा कौन है क्या है, आजू बाजू का कोई भी आया. सुबह उठ के उधर मैं बैठा. बाद में पुलिस कंप्लेंट अप्रोच हो गया. कंप्लेंट को बोला लाया है पैसा, मतलब लाया है. आज पार्टी नहीं लाया तुम, आज तो सब खाली दिख रहा है. मैंने मेरा पार्टी का हर एक मेंबर हर एक बिल्डिंग के पीछे रखा था, मतलब जब तक मेरा सिग्नल नहीं आएगा आप आगे नहीं आने का. नो बडी विल एक्सपोज देम, एंड एवरीबडी वाज हाइडिंग. देन ही टुक द मनी एंड ही लुक्ड हियर एंड देयर.
he asked his friend who was a पान शॉपकीपर के उधर का एक आदमी था, पैसा ले और भागो इधर से. ही वॉज, त्याने चैलेंज किया होता ना, उसने चैलेंज किया था और वो आदमी भागने लगा. मैं सीधा वो ऑफिसर को पकड़ा, सिग्नल दिया मेरे सिपाही ने बिल्डिंग के पीछे. देन एवरीबडी सराउंडेड एंड दैट पर्सन वॉज अरेस्टेड अलॉन्ग विथ दैट मनी. दैट टाइम मीरा बोरवनकर वॉज DCP of that area. She came to that chowki. She hired that officer. Then she called everybody, senior PI. ये करेक्ट आदमी था, मैं बोला था आपको इसको चेंज करो, फिर भी आपने चेंज नहीं किया और दिस हैज हैपेंड. That fellow was later on convicted. Now I will tell, we will go to another case. Now who can be the complainant? Anybody can set law into motion. One day I went to office as usual. At 10:30 I was called by DCP. One police officer in uniform was standing there. DCP told me, this is policeman attached to Sakinaga police station. You listen him and lay the trap. The complainant was a policeman. He was attached to Sakinaga police station. His temporary duty was to assist BMC in a demolition work. Entire Sakinaga is unauthorized. Daily 2-3 chals they were demolishing, and this constable was assisting that engineer, awardee engineer. One day while demolition was going on, they went to another area. There is an area called Tunga village near Larsen to Povai. When they entered the area, the constable told that engineer, sir, in this shall I stay, please don't demolish. Engineer, no. तुमने परमिशन लिया है? नहीं लिया. Then I will demolish it. But after many requests, only 20,000 नहीं, मेरे को at least 10,000 though I will not demolish. Ask each tenant to pay 15,000. The constable has showed his inability. He reluctantly agreed, and then we laid a trap at Elward Kurla. When we went for a trap, there were some people who were knowing some policemen, and some message went to the senior engineer. We were in a position, we have led a position in that engineer section. Public servant was attending his work. That senior engineer came out, why are you standing, come on, get everybody lost, nobody will stand here. He came near me, why are you standing, समझता नहीं, जाओ नीचे जाओ. बोले सर मेरा काम है. बोले काम भी इधर नहीं, तुमको जब जो ऑफिसर है उसका काम बाद में करेंगे. बोले सर हमारा कारपोरेटर आने वाला है, बाद में मैं अंदर आता हूँ. बोले आई विल नॉट गो, मेरा कारपोरेटर मेरे को ढूंढेगा, आई विल रिमेन. हाँ ठीक है आप इधर खड़ा रहो. आफ्टर 10 minutes कंप्लेन वेट इन साइड. अंदर जाके वो इंजीनियर को कॉन्टैक्ट किया. इंजीनियर केम अलॉन्ग विथ हिम आउटसाइड. दे वेंट टू लैट्रिन बाथरूम एंड देयर ही एक्सेप्टेड मनी. Then he was trapped and he was convicted for 2 years. About revenue trap, there was not one complaint. There were 200 complainants. I will tell the story. At about CR number 22 of 90. In 90, at about 2 a.m. I was in a deep sleep. डोर रिंग बेल बजने के बाद मैं उठा, देखा तो बाहर बहुत सारे लोग खड़े और देवर लीडिंग बाय वन इसाक भाई सरगुरु, आई कांग्रेस कारपोरेटर. मतलब सर क्या हुआ इतनी रात को मेरे घर पे आए? बोले सर आपको एडवाइस चाहिए. मतलब एडवाइस लेने का टाइम नहीं करा, तो 2 बजे मैं सुबह गया. नहीं बोले आप खुद इमरजेंसी. मतलब क्या इमरजेंसी? मतलब सर हमारा जो साकिनागा पाइपलाइन एरिया है वहाँ 200-300 आदमी को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नोटिस दिया है और कि तुम इतना एन टैक्स भरो. अभी वो गरीब लोग है, किसको 40,000 का, किसको 50,000 का नोटिस दिया है. और आफ्टर 15 days ही हैज लिटरली सील्ड ऑल द शॉप्स एंड हाउस. द ऑक्यूपेंट ऑफ द शॉप दे वर ऑल्सो हाउस बिहाइंड एंड दे ऑल आर स्टेइंग फॉर 7 days ऑन रोड. And there is a great emergency. मतलब what is your planning? मतलब हम लोग अभी सब खेरवाड़ी में जा रहे हो, खेरवाड़ी में रहता है, and we are going to kill him. अरे मतलब आप जाएंगे
तो उसका मर्डर केस रजिस्टर होगा। अरे आप जितने लोग हैं 302 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 12 साल अंदर रहेंगे, 14 साल अंदर रहेंगे। आप ऐसा मत करो, यू गिव मी वन स्ट्रांग पर्सन, कम टू द एंटी करप्शन ब्यूरो एंड वी विल ट्रैप इन, वी विल ऑफिशियली अरेस्ट हिम। बोले ठीक है। दूसरे दिन उन्होंने एक उधर का जिम्नाशियम का ओनर दिया, अनऑथराइज जिम्नाशियम थी, उसका ओनर एक बिल्डर आ गया मेरे पास कंप्लेंट देने को। देन आई रजिस्टर्ड अ केस एंड वी लेड ए ट्रैप। ट्रैप लेने के बाद हम चेंबूर में ट्रैप लगाया, वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर था, उसको पकड़ा, उसके असिस्टेंट को पकड़ा। तो ये 45 आदमी का उधर लिस्ट मिला, किसने कितना ब्राइब दिया था। तो 45 आदमी का मैं सबका स्टेटमेंट लिया। आई वॉज प्रिपेयरिंग द चार्जशीट, बट गॉड इज ग्रेट, नेचुरल जस्टिस, वो आदमी मर गया। दिस ट्रैप वॉज केम बाय मोर्चा, देर वॉज नॉट ए इंडिविजुअल कंप्लेंट। देर इज अनदर इंसिडेंट ऑफ डॉक्टर्स मोर्चा. It is a recent case of 2004. One doctor couple staying at Goregaon. The doctor, दोनों सर्जन, वाइफ इज हैविंग हॉस्पिटल, उसने एक ऑपरेशन किया था एमटीपी का, और दैट लेडी आफ्टर 2 days बिकम अनकॉन्शियस, सीरियस. शी वॉज रिमूव टू द हॉस्पिटल. नेक्स्ट डे शी सकम एंड शी डाइड. Then her body was sent to postmortem at Cooper Hospital. There was one doctor, I will not name. The doctor was a very, very corrupt, shamelessly corrupt fellow. He telephoned to our complainant doctor, I will prosecute your wife. She is negligent, उसके ऑपरेशन में ब्लीडिंग ज़्यादा हुआ, इसलिए वो मर गई है. Now I am giving my PM notes to Oshwara police station, and by evening your wife will be arrested. Doctor say, "Are some ethics? You are also doctor. We are also doctor. Show some. Give me some confession. You will have to pay 1 lakh rupees. Demand of 1 lakh rupees was there." Then doctor and his wife personally went and they tried to convince him, but he did not agree. बोला आपको 1 लाख देना है, मैं कुछ पैसा लेगा नहीं, कम लेगा नहीं. Then doctor took time. Then this doctor couple went to Sion Hospital. वहाँ मैडम सुचिता दल के वहाँ पे एक एक्टिव लेडी थी डॉक्टर, उन्होंने सारे डॉक्टर लोगों को जमा किया. बोले दिस इज वेरी सीरियस, आवर एंटायर वी हैव रिसीव्ड सो मेनी कंप्लेंट्स, ऑल डॉक्टर्स, ऑल PM डॉक्टर्स आर डिमांडिंग ब्राइब, सो वी हैव टू फिनिश दिस चैप्टर. So all the doctors in Morsha came to our anti-corruption office. They met DG and they gave complaint. Then trap was laid. When the complaint went in a mortuary where postmortem was being done, he gave the bribe. The doctor was having old PM notes, cause of death, negligence वगैरह. कंप्लेंट को दिखाया, ये PM notes है ओल्ड, इसमें कॉज आउट नेग्लिजेंस है, अभी आपने पैसा दिया, अभी मैं इसको फाड़ रहा हूँ. ही मेड 48 pieces of that PM notes, thrown in a basket. Then new PM note ready, it was issued, doctor paid the money. Then that doctor came out and gave a signal, we caught that doctor. मैं डॉक्टर को पूछा, मैंने डॉक्टर आदमी मर गया है, अभी ये मरने वाला आदमी का आप क्यों पैसा मांग रहे? डॉक्टर टोल्ड, सर ये मैयत, ये डेड बॉडी इज माय सोर्स, मुझे कौन पैसा देने वाला है? देन मैटर, देन आई इन्वेस्टिगेट द मैटर वेंट टू द कोर्ट. कोर्ट में जज ने मुझे बोला वो जो 48 PM नोट्स है, वो जो टुकड़ा किया, बोले आप ज्वाइन करो. फिर वो ज्वाइन करके दिखाया वो जज को. जज ने 2 PM नोट्स ऐसा दिखाया आरोपी को, एक्यूज को, ये PM नोट सही है, ये सही है, विच इज ट्रू. There was no answer and he was convicted for 2 years. This is now I will tell as per the suggestion of madam, false trap. अभी आपने जो क्लिप देखा जंजीर का, it is a false trap. There was no demand, but revenge was taken and he was arrested. कुर्ला में रेशनिंग ऑफिस है, वहाँ एक रेशनिंग असिस्टेंट रेशनिंग ऑफिसर मेरे पास है. बोला सर मेरा बॉस मेरे को बहुत हैरान कर रहा है, मुझे पैसा मांग रहा है.
अनफॉर्चुनेटली वो वेरिफिकेशन हम कर नहीं सके, बट वी हैव टेकन केयर, वी हैव सेंड वन पर्सन पंच विथ हिम। हम लोग रियली पैसा मांगता है देखो, और हमने उसका एफआईआर पर लेके ट्रैप लगाया। अंदर जब कंप्लेनेंट वेंट इनसाइड आर्टिसन रेशनिंग ऑफिस, तो रेशनिंग ऑफिसर बैठा था। अंदर जाके सीधा वो ड्रॉवर खोला, वो पैसा डाल दिया अंदर, बाहर आया, साहब पैसा लिया है पकड़ो। द पर्सन चीफ रेशनिंग ऑफिसर जो था ऑफिस का, वो बोला मैंने किधर पैसा मांगा है, किधर लिया, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई आर पुटिंग दिस मनी। तो ही शाउटेड, उसके दो ऑफिस के आदमी को बोला देखो ये जबरदस्ती पैसे डाल के गया, ये क्या लफड़ा कर रहा है ये। तो दो आदमी ने देखा हाँ पैसा गिरा है। तो मैं आफ्टर गिविंग द सिग्नल मैं जाके हमारे सिपाही ने जाके पकड़ा, बोले अरे मंडे छोड़ो उसको, पहला मेरे को पूछने तो क्या हुआ। मैं आयास पंच, हमारा पंच, मतलब क्या हुआ। बोला साहब ये ऑफिसर ने बिल्कुल पैसा नहीं मांगा था, ये खुद गया अंदर और ड्रावर में से पैसा डाला और बाहर आके आपको सिग्नल दे के उसने ब्राइब लिया है कर। देन इन दिस केस वी हैव नॉट अरेस्टेड दैट रेशनिंग ऑफिसर हु वाज इनोसेंट, and we have submitted charge sheet against that office assistant rationing officer for lodging a false complaint. We have done summary, that is B summary, that means maliciously giving false complaint, and that matter I don't know what has happened आगे। Now I will tell one police, आपको कोर्ट को जाने का मैं ऐसा आपको क्या ऊपर वाले को प्रार्थना करता हूँ कि आपको कोर्ट पुलिस ये प्रोसेस से जाने का आपको वक्त ना हो। वन कंप्लेनेंट वाज असॉल्टेड एट मरोल बाय हिज नेबर। द केस वाज रजिस्टर्ड, चार्जशीटेड, कंप्लेनेंट वाज अटेंडिंग द कोर्ट, बट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एट अंधेरी कोर्ट वाज मैनेज्ड बाय द एक्यूज। After many days the complainant asked कि ये मेरा केस कब चलने वाला है। बोले लेंगे हम, लेंगे। He used to attend but he was never examined by the PP. One day the complainant went outside after informing PP that I will come after half an hour. You please put my matter after half an hour. The mischievous PP requested court, sir, complainant is absent, issue warrant, and warrant was issued. The complainant got angry. अरे मैं कोर्ट में हाजिर है, इतना डेट को हाजिर है, मेरे को वारंट कैसा निकाला। Then he contacted PP. Then PP demanded rupees 200. That time 200 now means now 20,000. It's a case of 1988. Then we laid a trap at Andheri court. As soon as we entered in the court, so I have done that MIDC and SAR police and the advocates were knowing, अरे साहब आज इधर केस है, आज क्या ट्रैप भी हुई नहीं, मतलब ओल्ड केस में मैं एविडेंस देने को आया। Like that I remained there in front of PP office. PP भी मुझे जानता था, but he was under the impression I must have come from some evidence. Then our complaint went ahead and tried to give rupees 200. The PP extended his hand for accepting the money. Meanwhile, senior PI Jew, Mr. Muzumdar, came in uniform and saluted people. Good morning, sir. तो ये पीपी ने हाथ पीछे लिया, बोले साले इसके सामने क्यों लेना। तो सीनियर पे बोले आपका क्या चल रहा है, नो ऑब्जेक्शन, कैरी ऑन क्योर ऑन। ये अच्छा आदमी है सर, ये सोशल वर्कर है, ये कैरी ऑन। बाद में ये सीनियर इंस्पेक्टर बाजू में गए, रूम के बाजू में, इसने पैसा लिया, खीसे में रखा। यू आर ट्रैप्ड। एज सुन एज यू आर ट्रैप्ड, सर ये इसको अरेस्ट को पहला सीनियर पे, उसने मेरे को इंस्टिगेट किया पैसा लो। फिर मैंने डीसीपी को फोन किया, मतलब सर ऐसा पोजीशन हुआ है एंड दैट एक्यूज पीपी इज एलिजिंग कि ये पीपी को सीनियर पीआई के ऊपर एक्शन लो। मेरे डीसीपी ने बोला आज सीनियर पीआई उसको आरोपी बनने का क्या विटनेस बनने का। फिर मैं सीनियर पे के बोला, मतलब आपने तो अमेंडमेंट तो किया है, आप ले लो, उसको बोले है तो ऑफेंस इज कंप्लीट, यू इंस्टिगेटेड अबेटेड द क्राइम। अरे मेरे को क्या मालूम, बोले इनका ऐसा लफड़ा है, मेरे को बचाओ। मतलब आप विटनेस बनेंगे, हाँ बनेंगे। फिर उनका स्टेटमेंट लिया कि इन माई प्रेजेंस द पीपी एक्सेप्टेड ब्राइब, द पीपी वॉज कन्विक्टेड फॉर 2 years। आप पासपोर्ट के लिए आप हमेशा पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वेरिफिकेशन में वो पैसा
सिपाही मांगता है 200 दो, 500 दो, ये डिमांड पार्टी देख के उसका डिमांड तो चालू रहता है. जनरली लोग कंप्लेंट नहीं करते, उनको ज़रूरत रहता है पासपोर्ट जल्दी करने का, तो रिलेक्टेंटली दे एग्री, दे पे. One day our anti-corruption constable's brother was there. He went to NM Dushimar police station for passport work. He told that my brother is an anti-corruption और मुझे पासपोर्ट चाहिए. तो बोला कोई भी होने दो, पासपोर्ट आपको वेरिफिकेशन के लिए आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन आपके भाई एंटी करप्शन तो आप 500 रुपये दो. फिर वो कांस्टेबल का भाई आके उसके भाई को बताया, और कांस्टेबल मेरे पास, देखो इनको एंटी करप्शन कुछ डर नहीं सर, वो पैसा मांग रहे हैं मेरे भाई को. मतलब विल ले अ ट्रैप. मतलब कांस्टेबल वाला साहब, वो पुलिस वाला मैं बोला उसका काय को पेट के ऊपर है, मैं जाके रिक्वेस्ट करता हूँ. तो ये खुद गया, बोले आप आए तो ठीक है, फिर आप 200 रुपये दो. ये तो कांस्टेबल से भी सुधरने वाला नहीं, उसको अपन पकड़ेंगे. फिर हम लोगों ने ट्रैप लगाया और वो सिपाही को पकड़ा. अरे एंटी करप्शन में क्या, ऑफिसर जो है वो ऐसा कोई ऐसे सिलेक्टेड ऑफिसर ऐसा नहीं है, कोई नॉर्मल पुलिस से भी जाता है. देयर इज अ करप्शन इन एंटी करप्शन आल्सो. थाना नासिक ये जो यूनिट्स है वह रैम्पट करप्शन है. वहाँ के एंटी करप्शन को हर महीने को एक गवर्नमेंट फर्म का पैकेट आता है, बाबा हमारे ऊपर ध्यान रखो, ट्रैप मत करो. अगर उनको पैसा नहीं दिया तो वो खुद एप्लीकेशन टाइप करते हैं, इसका इतना प्रॉपर्टी है, उसका डीपीए का केस करो वगैरह. एवरीबडी इज स्केयर्ड एंड वो हटा देते. तो हमारे एंटी करप्शन के ऑफिसर हंडे करके थे, वो बदली हुए थे, नेरोल पुलिस के इंचार्ज थे. तो भाई प्रैक्टिस वहाँ एक लेडी जाती थी एंटी करप्शन की, और हर एक पुलिस स्टेशन में जाके पैकेट लेके थे. तो ये हंडे के पास आई, बोली पैकेट दो. हंडे बोला मैं पैकेट नहीं देने वाला, मैं एंटी करप्शन करके आया, तुम्हारा कंप्लेंट करेगा. तो ये भाग के गई उधर, बोली साहब मेरे को ब्राइब नहीं दिया उन्होंने. बोले ठीक है. फिर ये लोगों ने दूसरे दिन एक कंप्लेंट तैयार करके उधर का वो नेरोल पुलिस के ऑफिसर को ट्रैप किया, और वो उधर की जो थाना की टीम थी वो गई पुलिस स्टेशन में, हम पुलिस वाले को पकड़ा, ऐसा शाइनिंग करने को गई. ये सीनियर पे एंटी करप्शन किया करके गया था, उसको हिस्ट्री थी, ये लोग हमेशा पैकेट देते. इसने जाके स्टॉप किया था, उसने सीधा वो एंटी करप्शन का डीसीपी को गाली दिया, अरे बेशरम आदमी, तुम हर महीने वो पैकेट लेके जाता है, पैकेट लेके तुमको कुछ है ये है क्या, अधिकार है क्या लोग को ट्रैप करने का, तुम पैकेट काय कर लेता है फिर. यू शुड नॉट हैव ट्रैप. अगर तुम पैकेट नहीं लेते तो विल टेक केयर, हमारा आदमी कोई ट्रैप नहीं होगा, विल टेक केयर. तुम पैकेट लेते इसलिए बिंदास पैसे लेती. उसको गाली दिया. बाद में हम लोगों ने रिपोर्ट लाया कि ऐसा ऐसा उधर एंटी करप्शन में लफड़ा है. तो डीजी ने बोले उधर का जो हेड कांस्टेबल है उसको बुला, और क्या चला है उधर देखो. तो हेड कांस्टेबल को बुलाया, मतलब उधर एंटी करप्शन में क्या चल रहा है, तुम्हारा लोग पैकेट लेते ये लेते क्या करते. बोले साहब वो ऑफिसर लोग जमा करते, डीसीपी 6 लाख जमा करते, हमको नहीं देती. एंड फाइनली द मैटर वाज डिस्कस एंड डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, सबको बाहर निकाला. In 2005 I got ACP promotion. I was in ACP. So I was sent, there was no vacancy in Mumbai. So I was sent to Pune on deputation. In Pune I was additional SP for Pune range. I was handling 6 districts, Pune, Sangli, Satara, Kolhapur, Solapur. तो मुझे तो पहले ही मालूम था कि उधर एंटी करप्शन एंटी करप्शन ब्यूरो है. तो मैं उधर गया, उधर काम करने लगा. उधर एक दिन मुझे साहब ने बोला इधर चेक नाका पे बहुत करप्शन चलता है, और आर पाटिल साहब ने बोला एक्शन लेने का है, तो आप जाके एक डिकॉय बनो, 2 आदमी को लेके जाओ, और ये जो चेक नाके पे जितने भी लोग डिमांड करते हैं उनको पकड़ो. आई वॉज हैविंग एम्बेसडर, ऊपर दिया वाइट गाड़ी, मेरा गाड़ी निकला पूना से, सिग्नल गया, मयत पार्टी आ रही. जो सिपाही था अंदर का ही, मयत पार्टी आ रही नहीं, एंटी करप्शन की पार्टी आ रही मारने को तुम.
तो मैं जैसा आगे गया, कोल्हापुर में वो कागल के आगे जो चेक नाका है, वहाँ जाने तक जितने भी रास्ते में पोस्ट थे, पुलिस थे, ट्रैफिक थे, सब लोग लाइन से खड़े, सब लोग सैल्यूट करते। बोले वाई दे आर सैल्यूटिंग, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो दे वर इंटीमिडेट कि अभी आ रहे हैं वो साइड में किधर, तो एक्शन हो रहा है। फिर मैं कंप्लेंट पंच डिकॉय तैयार किया और एक ट्रक में बैठा। ट्रक में बैठने के बाद मैं चेक नाका पे जाने के बाद गाड़ी रुकी, मतलब वो पैसा मांगेगा उसको दे दूँ। तो वो दिन वहाँ कोई नहीं था, एक आदमी आया, ये बोला अब, बोले आज पैसा नहीं लेने का, वो पुणे से कोई खड़ूस ऑफिसर आया है आज पैसा बंद, बोले आज इधर कोई नहीं है, आप चले जाओ। मैं 2 दिन ट्राई किया, उधर ट्रैप हुआ नहीं। बाद में तीसरे दिन मुझे इंटीमेशन है कोल्हापुर में एक बैंक ऑफिसर को ट्रैप किया। कोल्हापुर देर इज नो CBI यूनिट, तो वहाँ के स्टेट यूनिट ट्रैप करते और बाद में CBI को भेजते। मैं विजिट को गया उधर, मैं DYSP को मिला, मतलब ट्रैप किया, एक्यूज किधर? एक्यूज नहीं है, बोले एक्यूज नहीं, ये अरेस्टेड, रेड हैंड पकड़ा करके मुझे इंटीमेशन है, मेरे को विजिट को भेजा है SP ने। बोले घर में सोया है। अरे बोले एक्यूज अरेस्टेड, हम घर में सोया, बड़ी देर, वो पब्लिक सर्वेंट किधर भागने वाला है, कल 11 बजे कोर्ट में आएगा। बोले दिस इज ए वे ऑफ वर्किंग। नहीं साहब वो सब हो गया है। मतलब हो गया क्या? नहीं आपको आई विल अरेस्ट यू फॉर ऑफरिंग ब्राइब, मतलब आई वांट एज एक्यूज जस्ट नाउ। फिर मैंने SP को लगाया, मतलब इधर क्या चला सर, देखो एक्यूज इज ट्रैप एंड एक्यूज है ही नहीं इधर, फिर वो सब इंक्वायरी करो और मुझे रिपोर्ट दे दो। एक एंथोनी जोसेफ फर्नांडिस करके मेरा एक अच्छा कंप्लेंट था 1988 में। कंप्लेंट कैसा बना मैं बताऊँ। बोरोली स्टेशन से उसने फ़ोन किया, सर मैं रेशनिंग ऑफिस गया था, मेरा पिताजी मर गए, तो मेरा पिताजी का नाम डिलीट करने का है। तो मैं डिलीट करने गया रेशनिंग ऑफिस में, तो रेशनिंग क्लार्क ने मुझे रेशनिंग ऑफिसर के सामने खड़ा किया। फिर वो रेशनिंग ऑफिसर ने मेरे को 10 मिनट इतनी गाली दी, मैं अरे तुम मरेला बाप क्या रेशन खाता है, ये खाता है वो खाता है। 50 रुपये मांगा, मतलब 50 रुपये में देता था, लेकिन गाली इतनी खाया है तो मुझे उसको पकड़ना है मतलब एंटी करप्शन में आ जाओ। तो उसने उसको 50 रुपये दिया और बोला मेरा दूसरा काम है चेंज ऑफ एड्रेस का, बोले कल 50 लेके आओ, दूसरा काम कर ले। फिर हम लोगों ने ट्रैप लगाया, ट्रैप लगाने तो रेशनिंग ऑफिसर को पकड़ा, उसके खिसे में कल जो दी थी नोट वो वैसे ही मिली वैसी, और ये ट्रैप हो गया। बाद में वो जो कंप्लेनेंट है वो वापस 1 साल के बाद आया, बोला सर मेरा सिस्टर BMC में था, वो मर गई है और उसका जो फंड है तो आई एम अलोन नॉमिनी, तो मैं 6 महीने से BMC ऑफिस जा रहा हूँ और मेरे नॉमिनी का पैसा नहीं दे रहे। 5 लाख रुपीज़ था। तो उधर की जो डिप्यूटी लीगल एडवाइज़र थी वो बोली तुम किधर नौकरी किया है, तुमको काय का पैसा देने का 5 लाख तेरा सिस्टर का है और तुमको अपन 2.5 लाख करेंगे, मेरे को 2.5 लाख आपको 2.5 लाख, मैं तुरंत आपका फाइल ये करती हूँ। 6 महीने का इंतजार किया, बोला मेरा सिस्टर का पैसा है, मर गई है, आई गॉट इमोशनल वैल्यू, आपको वो 5 लाख मुझे देना पड़ेगा। वो बोले मैं जब तक पैसा नहीं था मैं दूंगी नहीं, क्या करने का करो। फिर हम लोगों ने ट्रैप लगाया, वो लेडी ऑफिसर को पकड़ा। अभी एक RR पाटिल साहब का एक इंसिडेंट बताता हूँ। RR पाटिल साहब के पास होम मिनिस्टर थे, उनके पास एक आदमी गया, बोला रेवेन्यू डिपार्टमेंट कुछ लोग पैसा मांग रहे, तो उन्होंने DG को बोला देखो ये सांगली में ट्रैप करो और वो जो लोग हैरान कर रहे। फिर कंप्लेंट गया एंटी करप्शन ब्यूरो सांगली में, उसका कंप्लेंट वगैरह लिखा, ट्रैप लगा। जैसा ही ये कंप्लेंट पब्लिक सर्वेंट के पास गया पैसा देने को, अरे भाई क्यों गया तुम RR पाटिल साहब के पास, मेरा काम फ्री में ऑलरेडी कर चुका है मैं, तुम वापिस जाओ। होम मिनिस्टर ने DG को बोला कि मैं होम मिनिस्टर करके कंप्लेंट भेजता है, मैं ट्रैप इज लिक्ड, पब्लिक सर्वेंट को पहला ही मालूम कि वह RR पाटिल के पास क्यों गए। बोले किसके पर विश्वास रखने का, कैसा काम करने का, क्या हो रहा है ये। फिर ऑफिसर का उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। उसके 1 महीने के बाद मेरे पास खादी ग्रामोद्योग भंडार, खादी ग्रामोद्योग मालूम है डिपार्टमेंट आपको, तो उसमें एक आदमी का काम था, उसको डिमांड किया गया
तो बोला मैं पैसा दूंगा नहीं, कोई भी हालत में आपको करना नहीं। वो स्टूडेंट था। बाद में हम लोगों ने सब वेरीफाई किया। वो जो खादी ग्रामोद्योग का ऑफिसर था वो बोला आपको पैसा देना पड़ेगा। फिर उसने उसके बॉस के पास लेके गया, बोले ये पैसा नहीं दे रहा है, अपन काम नहीं करेंगे। तो बॉस बोला तुम पैसा जब तक नहीं देता है हम काम नहीं करेंगे। फिर 2 दिन के बाद वेरीफाई करके ट्रैप लगाया। तो पब्लिक सर्वेंट था, वो बोला मैं पूना में शिवाजी नगर सिस्टम पे वहाँ आ जाओ, वहाँ पैसा लूँगा। बम्बई में नहीं, वो एंटी करप्शन वाले बहुत उधर के एक्टिव है, इधर आ जाओगे। तो फिर हम लोग ट्रेन से गए, उसको उधर पकड़ा वाइल टेकिंग ब्राइब एट शिवाजी नगर स्टेशन। बोला आपके बॉस किधर है? बोले आज पूरा महाराष्ट्र के खादी ग्रामों के सारे बॉसेस आए रहे और कॉन्फ्रेंस चल रहा है, ही इज एड्रेसिंग दैट कॉन्फ्रेंस। पुणे बॉम्बे रोड में वो खादी ग्रामोद्योग का ऑफिस है, वहाँ कॉन्फ्रेंस चल रहा है। फिर हम लोग इसको पकड़ के उधर गए। बाहर प्यून खड़ा था, मतलब साहब को मिलना है। बोले आज साहब कॉन्फ्रेंस में 2 दिन के बाद आओ। मतलब एंटी करप्शन वाले कोई भी हो इधर आने का नहीं। अरे मतलब तुम्हारा आदमी पकड़ा है, साहब को बोलो। नहीं अभी कुछ बोलने का नहीं, वो साहब बिजी। अरे मतलब तुम्हारा साहब वांटेड है हमारे एक केस में। तो वो हट गया बाजू में। फिर अंदर गया, कान में बोला साहब कुछ लफड़ा है बाहर। फिर वो बाद में फिर मैं अंदर गया। ऐसे लोग बैठे 50 सब पूरा महाराष्ट्र से आए थे। मतलब सॉरी वी आर डिस्टर्बिंग योर कॉन्फ्रेंस, your boss is wanted in a corruption case and we are arresting him. He was arrested, he was taken to Mumbai. He was from Sangli. While we had arrested him, आपको गढ़चिरौली भेजूंगा। मतलब भाई भेज, किधर भेजने का, मेरे को ड्यूटी तो कंप्लीट करने दो। बोला मेरा भाई आर पाटिल साहब का चीफ कैनवेंसिंग ऑफिसर है और आपको ये बहुत भारी पड़ेगा। बोला आपको क्या करने का करो, आई एम डूइंग माई ड्यूटी। After 2 days, we got call from R.R. Patel Home Department, रामटेक बंगले पे आ जाओ फाइल लेके। फिर मैं सर्वोदय मैडम रामटेक बंगले पे। R.R. पाटिल वॉज अ वेरी जेन्युइन पर्सन। उन्होंने बोला क्या हुआ, हम लोगों ने सारी स्टोरी बताई। फिर हम लोग कैसेट लेके गए, वो कैसेट उन्होंने खुद सुना। बाहर उनके रामटेक बंगले में 50-60 लोग सांगली से आए थे, सारे कार्यकर्ते। ये चीफ कैनवेंसिंग ऑफिसर थे, इसलिए सारे कार्यकर्ते आए थे। फिर आर पाटिल ने बाहर जाके एड्रेस किया, बोले ये तुम्हारा जो आदमी के तुम लिए आए हैं, मेरी आवाज़ सुनो। कैसेट लगाया और वो थ्रेटनिंग करके पैसा मांग रहा है, वो सुनने के बाद 50 लोग गायब वहाँ से। तो एंटी करप्शन में अगर ट्रैप करते समय ये होम मिनिस्टर तक भी सपोर्ट होता है, खाली आप कंप्लेंट करके आगे आना चाहिए। अभी एक आपको थाना में हम लोगों ने 9 ट्रैप किया था। अभी ये लास्ट ट्रैप का बोलता हूँ, इसके बाद अपन करेंगे। मैडम आने तक मैं डोंबिवली पुलिस स्टेशन में। अभी सैराट पिक्चर देखा होगा आपने, वैसा एक स्टोरी हुआ था। एक लड़का और लड़की बाहर गए थे और लड़की लेट नाइट घर आई। तो उसके तब तक उसका पिताजी जाके पुलिस स्टेशन में लड़की का मिसिंग कंप्लेंट दिया। कंप्लेंट देने के बाद रात को 2 बजे वो पिताजी गया, बोला मेरा लड़की घर में आ गया, मेरा कंप्लेंट कैंसिल करो। लेकिन ऑफिसर सामने वाला करप्ट था, किधर गई थी, मुझे इन्वेस्टिगेशन करने का, लेके आओ उसको। अरे बोले मेरा कंप्लेंट नहीं, आपको क्या इन्वेस्टिगेशन करने, उसको लेके आओ, मुझे इन्वेस्टिगेशन करने का है। वो कहाँ थी? फिर वो लड़की को उसने दमदाटी करके पूछा तुम कहाँ थी, क्या थी, कौन था। फिर वो लड़के को उसने पकड़ा, बोले मैं तुम्हारे ऊपर रेप का चार्ज लगाओ। बोला रेप, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, हम लोग गए थे बाहर, उसको लेट हो गया। नहीं तुमने उसको लेके तुमने रेप ही किया है, ये किया है, वो किया, ऐसा एलिगेशन करने लगा। तो इन्होंने आईओ ने एक कंप्लेंट ड्राफ्ट किया, फॉल्स कंप्लेंट, और ये 376 रेप के चार्जेस लगा के लड़की को जाने को बोला। और ये हमारे कंप्लेंट को बोला तो आई विल अरेस्ट यू इन रेप केस। बाद में ये कंप्लेंट गया थाना में, वो थाना में देखा, उधर आजू बाजू में सुना, अरे बोले इधर लपड़ा है, इधर कंप्लेंट देना नहीं चाहिए। फिर वो हमारे डीजी को आके मिला और हमको बॉम्बे की टीम चाहिए, ऐसा पुलिस ऑफिसर पैसा मांग रहे हैं, झूठा ट्रैप केस रजिस्टर किया है फॉर नॉट अरेस्टिंग, पैसा मांग रहे हैं। फिर हम लोगों ने ट्रैप लगाया, वो ऑफिसर को पकड़ा। फिर वो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट रूल्स उसको बोला कि तुम घर में फ़ोन करो और बोलो मुझे अरेस्ट किया है, ऐसा किया है। फिर वो पुलिस ऑफिसर ने घर में फ़ोन किया, उसकी औरत इलिटरेट थी,
उसने बोला मी जो एंटी करप्शन ने पकड़ा है क्या, तुम्हाला कोणी पकडलं, तुम्ही तो पुलिस आहे, तुम्ही सगळ्यांना पकडता, आपको कैसा पकड़ा? मैं बोले एंटी करप्शन ने पकड़ा है, अभी वो घर में आएंगे, झड़की लेंगे, ये लेंगे, ऐसा लेंगे। बाद में वो ट्रैप केस हो गया, इन्वेस्टिगेशन चला, तो एक्यूज ने मेरे खिलाफ 2 पेजेस का लंबा एलिगेशन किया कि ये लोग जब मेरे को पकड़ा, मेरे को गाली दिया, ये दिया, वो दिया, ऐसा सब एट्रॉसिटीज एक्ट के सारे सेक्शन लगा दिए उसने हमारे, और ये लोग को अरेस्ट कर करके रिकमेंड किया। इंक्वायरी हुआ, हमारे साथ में टीम थी, तो एलिगेशन को कुछ हुआ नहीं, दैट ऑफिसर वाज सस्पेंडेड। उसने सब इन्फ्लुएंस लगा के खोपोली पुलिस स्टेशन में उसका बदली हो गया, वो खोपोली पुलिस स्टेशन में रेप केस में वापस ट्रैप हो गया। दैट केस वाज हर्ड एंड ही वाज कन्विक्टेड आल्सो। नाउ वी विल गो टू, अभी आप ट्रैप करने को जाते तो ट्रैप मनी, जो डिमांडेड मनी जो है, समझे किसने 5,000 मांगा है, तो एंटी करप्शन के पास 5,000 नहीं होता है, आपको पैसा देना पड़ता है। बाद में गवर्नमेंट आपको 1 महीने के बाद वो पैसा वापस करती है। इन अर्लियर एंटी करप्शन यूज टू गिव मनी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में ऐसा हुआ कि एंटी करप्शन इज इंटरेस्टेड पार्टी, कि दे शुड नॉट, इसलिए वो पैसे के लिए वो उनका ट्रैप ज़्यादा के दिखाने के लिए करती है। उसके बाद वो प्रोसीजर बंद हुआ, लेकिन पब्लिक का पैसा अगर अटकने लगा जितना भी ब्राइब, तो वो कैसा करेगा, इसलिए वो जो कंप्लेंट रहता है उसने एप्लीकेशन करने के बाद वो ट्रैप मनी एप्लीकेशन के बाद 30 दिन में वापस मिलता है। एंटी करप्शन का ट्रैप का प्रोसीजर में समझा, आप तो टेलीफोन पे कंप्लेंट नहीं कर सकते, यू हैव टू अटेंड एंटी करप्शन ब्यूरो, वहाँ जाके आपको पुलिस स्टेशन जाते हैं वैसे ही कंप्लेंट करते हैं, वो वेरीफाई होता है। बाद में उधर प्री टैप फॉर्मेलिटी, पोस्ट ट्रैप, प्री टैप फॉर्मेलिटी होता है, और बाद में पोस्ट ट्रैप के लिए निकलते। कोई रिपोर्टर नहीं तो मैं सीक्रेट बोलता हूँ कि जो नोट को जो पाउडर लगाते, क्यों लगाते पाउडर, महाराष्ट्र स्टेट में एंथ्रासिन पाउडर करके, वो जो पाउडर रहती है वो अल्ट्रा वायलेट रेज मारने के बाद ब्लूइश फ्लोरेसेंस आता है उसमें से, दैट पाउडर इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। हम लोग जब एक्यूज को पकड़ते हैं, बोलता है मैंने पैसा मांगा नहीं, मैंने लिया नहीं, ऐसा उसका स्टोरी रहता है। तो बाद में उसको हम अल्ट्रा वायलेट रेज के अंदर उसका हाथ दिखाते, ये पाउडर कैसे आ गया, हाउ पाउडर इज पास्ड ऑन, ये पाउडर नोट पे थी वो तुम्हारे पास कैसे आ गई, इम्पोर्टेंट देयर। और सीबीआई जो वो फिनोप्थेलिन पाउडर यूज़ करते, फिनोप्थेलिन पाउडर यानी वो पाउडर उसने पब्लिक सर्वेंट ने पैसा लाने उस हाथ को जो पाउडर लगती है वो विजिबल नहीं रहती, फिर वो केमिकल में वो हाथ जो एक्यूज ने ये लिया ब्राइब, वो केमिकल में कार्बो कुछ रहता है सोल्यूशन, उसमें डुबाते तो वो जो सोल्यूशन रहता है वो पिंक हो जाता है, लाल हो जाता है, इसलिए रंगे हाथ पकड़ा वो उसके ऊपर से रंगे हाथ पकड़ा, वो सीबीआई इज यूजिंग दैट सोल्यूशन। नेक्स्ट, अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्प्रोपोर्शनेट सेक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेट सेक्शन ये सुना तो बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर भी डरते, क्योंकि वही सेक्शन के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। जो बड़े बड़े ऑफिसर रहते वो खुद बोलते हैं मेरे को 50 दो, मेरे को 1000 रुपये दो, देट पब्लिक जो सबर्डन रहते वो लोग पैसा लेते हैं और ये वरिष्ठ को देते, बाद में दे आर एक्यूमुलेटिंग द मनी, फिर प्रॉपर्टी लेते हैं, फिर ये अपसंपदा करके उसका सेक्शन है। व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेट, तुम्हारा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू लाइकली सेविंग। तो लाइकली सेविंग के अंदर आपके एसेट कवर होते हैं कि नहीं, अगर आपको 10 लाख पगार है, 5 लाख एक्सपेंडिचर है, तो आपके पास 5 लाख होना चाहिए, लाइकली सेविंग 5 लाख होना चाहिए। आपके पास 20 लाख का प्रॉपर्टी है, 70 लाख का फ्लैट है, तो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 13(1)(e). तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में दिस सेक्शन वाज नॉट देयर in 1947. In 1964 संथानम कमिटी वाज डिप्लॉयड बाय द गवर्नमेंट, और उन्होंने रिपोर्ट दिया, बाद में ये दैट टाइम सेक्शन 5(1)(e) था, अभी 13(1)(e) के अंदर ये डिस्प्रोपोर्शनेट सेक्शन के अंदर केस करते। डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के बारे में अगर आपको कंप्लेंट करना है तो उसके लिए आपको पब्लिक सर्वेंट का प्रॉपर्टी क्या है वो सब लिस्ट देके, यू नीड नॉट गो टू द एंटी करप्शन ब्यूरो फॉर लॉजिंग डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस। आप एक एनोनिमस एप्लीकेशन भी भेजा कि इसका इतना इतना प्रॉपर्टी प्रूफ भेजेंगे, तो भी डिस्प्रोपोर्शनेट का इंक्वायरी शुरू होता है। शुरू में वो डिस्क्रीट इंक्वायरी करते, यानी विदाउट टचिंग दैट पर्सन, एंड
बॉर्डर लाइन आ गया तो ओपन इंक्वायरी करते हैं। मैं वो आदमी को बोला कि तुम्हारे पास इतना प्रॉपर्टी, इतने 10-12 बंगले हैं, इतनी गाड़ियाँ है, कैसा लाया, कितना पगार है, व्हाट इज योर सोर्स, उसको क्वेश्चन करते। अगर वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका सेटिस्फैक्ट्री, देन दिस डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस इज रजिस्टर्ड। अभी डिस्प्रोपोर्शनेट की एक केस मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम पे। एक सीनियर इंस्पेक्टर थे और सारे लोगों से पैसे लेते थे। उनको ही वो वुमेनाइजर, उनको 4 औरत थी। लास्ट टाइम आपने बोला था, आपको याद है कि नहीं मालूम नहीं। हर एक औरत को नाम दिया था, जोन 1, जोन 2, जोन 4। तो 4th औरत जो थी वो तमाशा में डांस कर रही थी। वो बोली मुझे तमाशा थिएटर बांध के दो। फिर श्री रामपुर में तमाशा थिएटर बांध के दिया। इन्होंने यूनिफॉर्म में तैल चित्र लगा दिया और ये इनॉग्रेशन दिन पम्पलेट बांटे। वो अन्ना हजारे के पास गए और बाद में वो ही वॉज द बिग एक्यूज डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट। उसके सर्च के टाइम वो औरत के लेटर पढ़ी में, प्रिय बाई को, आई गॉट ₹70,000 हफ्ता इन दिस मंथ, आई एम सेंडिंग 25,000 एंड साड़ी एंड ऑल दैट। दैट इज द डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस। वन इंस्पेक्टर चौहान वाज देयर, दिस इज आ बैल मुझे मार। उन्होंने एक फ्लैट बेचा खेरवाड़ी में 2.5 लाख में, वो टाइम में 85 में। वो गया 5 लाख में, 2 लाख बैंक से लोन लेके 7 लाख का लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट प्लॉट लिया। अभी फॉर पब्लिक सर्वेंट, पुलिस ऑफिसर को या कोई पर्सन कोई भी प्रॉपर्टी लेना है तो महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 19 के अंदर परमिशन लेना पड़ता है कि आई एम टेकिंग दिस प्रॉपर्टी, आई हैव रेज द फंड लाइक दिस। तो एक इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर ने ऐसा एप्लीकेशन किया, मैंने लोखंडवाला में 7 लाख का फ्लैट लिया है। तो एप्लीकेशन पहला बाबू के पास जाता है। बाबू ने देखा सीनियर इंस्पेक्टर 7 लाख लोखंडवाला पैसा लिया, कहाँ से पैसा लाया। उसने एक नोटिंग पुटअप किया, कमिश्नर को लिखा कि हाउ दिस सीनियर पे कैन अफोर्ड फ्लैट ऑफ 7 लाख। और 86 का 7 लाख यानी आज हो गया 7 करोड़। तो कमिश्नर ने वो नोटिंग पे लिखा यस DG ACB टू प्रूव। फिर एंटी करप्शन को इंक्वायरी हुआ। हमारा इन्वेस्टिंग ऑफिसर गया लोखंडवाला बिल्डर के पास कि ये ऑफिसर ने ऐसा फ्लैट लिया है, दिखाओ रिकॉर्ड, हाउ मनी वॉज पेड, चेक से पेमेंट है, कैश से, वो सब दिखाओ। उन्होंने रिकॉर्ड देखा, बोले फ्लैट तो लिया है लेकिन उसके बाजू में उसके औरत का भी फ्लैट है, उसके नीचे उसका बेटी का भी एक फ्लैट है, बाद में उधर एक शॉप है, उसके जावई के नाम पे एक फ्लैट है। एक दिन में हो गया वो डिस्प्रोपोर्शनेट। रिपोर्ट वॉज सेंड, केस वॉज रजिस्टर्ड। जब मैं ट्रैप केस को और ये कोर्ट को जाता था, ये सीनियर इंस्पेक्टर, उसकी वाइफ, उसकी बेटी, उसका जावई, चारों आरोपी लाइन से बैठे थे, चारों के चारे 2 साल करने। इट्स अ वेरी डेंजरस सेक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट को बहुत डरते हैं सब पब्लिक सर्वेंट। अगर आपको इन्फॉर्मेशन देना है, अगर बहुत ही आदमी करप्ट है, प्रॉपर्टी ले तो आप एनोनिमस एप्लीकेशन भी भेज सकते। एक्चुअली देयर इज अ गवर्नमेंट GR कि एनोनिमस एप्लीकेशन शुड नॉट बी एंटरटेन, बट वी वेरीफाई द कंटेंट। इफ द कंटेंट्स आर ट्रू देन वी इन्वेस्टिगेट। ये डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के बारे में ज़्यादा कोई कंप्लेंट नहीं करता है। ज़्यादा कंप्लेंट कौन है? घर वाले करते हैं, रिलेटिव लोग। तो बोले यार गाँव में ये चल के आता था, अभी गाड़ी में आता है। इसका पहला चाल में रहता था, अभी 2 महले का बंगला बांधा है उसने। फिर उसका फोटो वोटो करके इधर DG एंटी करप्शन को भेजते कि इसके ऊपर कार्रवाई करो। ऐसा लोग कंप्लेंट करते बाद में। यार एक औरत ने, शिवाजी अमेरिका, उसकी सिस्टर वॉज द वाइफ ऑफ पुलिस ऑफिसर। दैट पुलिस ऑफिसर वॉज टॉर्चरिंग हिज वाइफ। तो ये सिस्टर मिलने को आई तो ये बोले ऐसा मेरे को तकलीफ देता है, ये देता है। बोली इसका आई विल टीच हिम लेसन। उसने पूरा प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट लिया, बैंक स्टेटमेंट लिया, अमेरिका गई, अमेरिका से एक रजिस्टर भेजा DG एंटी करप्शन को, इसका इंक्वायरी करके ले इसका प्रॉपर्टी इतने, और उसका इंक्वायरी स्टार्ट हो गया। तो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट कंप्लेंट करने के लिए जनरली कोई करता नहीं, लेकिन अगर आपको मालूम है कि ये आदमी ने बाई इलीगल वे बहुत प्रॉपर्टी बनाया लोगों को हैरान करके। अभी आपने जो ऑनरेबल DC मंदिर है, उनका प्रॉपर्टी कितना करोड़ है, आप TV पे तो देखा होगा। और लोग शान से बोलते कि हम लोग तो पथरे के झोपड़े में रहते थे, मेरा कुछ नहीं था और मैं इतना बड़ा। अरे पर हाउ बड़ा? यो क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएट द गवर्नमेंट मनी एंड यू बिकम बड़ा। दैट इज नॉट करेक्ट। ऐसा कंप्लेंट
सारे लोग नहीं करते। अगर पब्लिक सर्वेंट के डिस्प्रोपोर्शनेट ऐसे का कंप्लेंट करेंगे तो मेरे को लगता है 95% पब्लिक सर्वेंट जेल में जाएगी, 95%। नाउ पब्लिक सर्वेंट को चार्जशीट जाने के बाद डायरेक्ट कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेती, उसके लिए सैंक्शन लगता है। सैंक्शन इज गिवन अंडर सेक्शन 19 ऑफ द पीसी एक्ट। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो 19B, स्टेट है तो 19C। गवर्नमेंट सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन होता है? विद अपॉइंटिंग अथॉरिटी। और जो आदमी को पब्लिक सर्वेंट को रिमूव करने का पावर है, ऐसा ही आदमी सैंक्शन ले सकता है। जब तक सैंक्शन नहीं मिलती कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता है। There are only 30 sections in this PC Act. अभी मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है कि we will take now question answer session. The question is, Tupe sir, if asked for a bribe by BMC Police Government Services, what is the step-by-step procedure to file a complaint with the Anti-Corruption Bureau? I already told if any demand of bribe is there, first you say no, and if you want to lodge a complaint, come to the Anti-Corruption Bureau. If you are having some evidence, very good. You are having mobile in your hand, record is, say कि कैसा पैसा मांग रहा है वो सब, वो चुपचाप रिकॉर्डिंग करो। अगर नहीं भी तो ये रिकॉर्डिंग हुआ तो भी ये नहीं, एंटी करप्शन में आने के बाद आफ्टर लिसनिंग योर कंप्लेंट वी विल आस्क यू टू कॉन्टैक्ट दैट पब्लिक सर्वेंट एंड यू हैव टू टॉक टू हिम कि मैं इतना पैसा दे नहीं सकूँगा, और फिर वो कहना इतना ही दे दो, दैट ब्राइब इज कन्फर्म, देन योर FIR इज रजिस्टर्ड एंड देन ट्रैप इज लेट। Should section 19 of the PCA mandating sanction of prosecution be deleted since it creates an obstacle in convicting the corrupt? Now, section 19 is a protection given to the public servant by the law itself, because some people, ये आपने क्लिप देखा जंजीर का, some people while discharging lawful duty in order to harass the public servant, कि अगर कोई ऑनेस्टली काम कर रहा है उसको ये करने का है तो पब्लिक झूठे कंप्लेंट करती है, तो वो पुलिस तो उसको प्रोटेक्शन है 19 सेक्शन के अंडर कि वो सैंक्शन देने के बगैर प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। और अभी लेटेस्ट 15 दिन पहले गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर किया है, अगर आपको कोई भी इवन मैजिस्ट्रेट एंड जजेस दे आर ऑल्सो नॉट सपोज टू इनिशिएट एक्शन अंडर 156(3) डायरेक्टली ऑर्डरिंग रजिस्टर द क्राइम दे अनलेस सैंक्शन इज देयर। तो सैंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Sanction is very good for, because they are while discharging duty, अगर कुछ होता है गलती, there is no criminal intention, तो वो प्रोटेक्शन है। अगर सैंक्शन नहीं होता तो कोई भी आके कंप्लेंट करके कुछ भी सब NRC होता, तो सैंक्शन इज इसेंशियल। Address of the Office of the Anti-Corruption, there is a clipping here which we will show it to you at the end. But for any address like this, you can just Google it out also. Anti-Corruption On Bureau, website is there. It is there on the website. Okay. BMC appointed private body to demand money from public directly if kachara is thrown on road without any law has been passed. Is this a bribe? मैं आपको सेक्शन 8 बताया है कि टेकिंग ब्राइब ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ये आप if he is taking bribe, if he is giving receipt, well and good, but if he is taking bribe and not giving receipt, it is a bribe and he can be prosecuted under section 8. Please comment why the Anti-Corruption Bureau did not take any action when a resident in Kurla laid a trap where 32 cops were caught on camera. Do you encourage common citizens to do sting operations? Now that 32 people went one by one to that builder, and the builder has given packets, amount to each and every person. In law, if there are Supreme Court judgments, unless there is a demand, mere acceptance is not sufficient to prosecute that person. Actually, that case is, अगर मेरा ओपिनियन लेंगे आप, I am having 12 years experience practical in anti-corruption. I have attended Supreme Court for 6 years, High Court 15 years, and mere acceptance is not offense. ड्यूरिंग अरविंद इनामदार जो डीजी थे, उन्होंने एक चांस ट्रैप किया था। बोले ट्रैफिक वाले सटा थे, चलो वो का एक गाड़ी पे कंप्लेंट बिठाया, मांगे पंच बिठाया, बोले जाओ, पुलिस वाले ने मांगा तो उसको दे दो और पकड़ो। दिस इज कॉल्ड अ चांस ट्रैप, देयर इज नो डिमांड।
वो जो ट्रैफिक कांस्टेबल खड़ा है उसने पैसा मांगा ना, मेरे को पैसा दो कर, और यू आर ऑफरिंग. एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये यू अरेस्ट दिस द पर्सन हु आर ऑफरिंग द ब्राइब. दूसरा एक इंटरेस्टिंग केस पड़ा था अभी मैं याद एक कवल से, Don't raise the question. आर पाटिल साहब ने ऐसा बोला पुणे में बहुत ट्रैफिक पुलिस पैसा मांगते हैं, आप सबको ट्रैप करो. तो वहाँ के जो एसपी थे उन्होंने मुझे बोला कि आप वी विल ले ट्रैप और चांस ट्रैप और वी विल अरेस्ट ऑल कांस्टेबल. मतलब सर इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. मैं बोले करेंगे, ट्रैप करेंगे. फिर ही कॉल्ड 6 बॉयज, 6 लड़के बुलाए, मोटरसाइकिल उनके पीछे पन बिठाया, हर एक के पास 50 रुपये दिया, पाउडर लगा के बोले जाओ सिग्नल तोड़ो, कुछ भी करो. उसने पैसा मांगा, दे दो, पीछे पीछे एक गाड़ी पकड़ो उसको. ऐसा 5 लोग को ट्रैफिक को पकड़ा. छठवा जो आदमी था बूढ़ा कांस्टेबल, उसके ये हमारी जो डिकॉय लेडी थी वो गई, बोले मैं 2 बार सिग्नल तोड़ा, आपने पकड़ा क्यों नहीं? अरे बोले बेटी मेरी तुम बेटी जैसी, जा दो. वो बच गया खाली. 5 वेर अरेस्टेड एंड दे वर सस्पेंडेड. But we could not send a charge sheet because law itself is there. Unless demand is there, mere accept is not fit for prosecuting the case. Sir, this is a jurisdiction question. For corrupt income tax officer, do we approach the CBI or the Anti-Corruption Bureau? And when officers are from out of Yes, state, very nice example. Sitting, your member is here. Ishwar Bhai, Jara, please stand up. This member is a friend of mine. He is a complainant in my earlier case. He went to income tax department as there was scrutiny. He was called several times, harassed like anything, but he is a man of principle. वो Moneylife Foundation का है ना, bribe नहीं देने. Then finally the officer demanded bribe. He did not give. He went up to the additional commissioner of income tax. बोला मैं bribe दूंगा नहीं, I will teach you a lesson. इन्होंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव डिप्लॉय किया और ये लोग जितने भी एडिशनल कमिश्नर उनके सबके एसेट ढूंढे. एडिशनल और सीबीआई के पास कंप्लेंट दिया, एडिशनल कमिश्नर वाज अरेस्टेड, सस्पेंडेड. आई अदर फॉर एग्जांपल इज हियर ओनली. can we give a big hand to? If a person files Anti-Corruption Bureau complaint and the officer of the Anti-Corruption leaks this matter, what happens to the complainant and his matter? Will it hamper the case proceedings? And how do you protect them? लीकिंग इज अ सीरियस मिसकंडक्ट. अगर मालूम पड़ा कि इसने डेलिबरेटली लीक किया है, इन ऑर्डर दैट ट्रैप शुड नॉट बी हेल्ड, देयर इज अ डिपार्टमेंट इंक्वायरी कैन बी हेल्ड अगेंस्ट दैट पब्लिक सर्वेंट एंड ही विल बी रिमूव्ड फ्रॉम एंटी करप्शन और जो भी है, एंड ही विल बी पनिश्ड एज पर द डिपार्टमेंटल प्रोसीजर. This is a question which talks about when, let's say, registrar's office does not take any cognizance of the complaint of the member of misappropriation and all. Does it come under the purview of the anti-corruption? Registrar of society, they are government servant. We are trapped the registrar of the society. Even आपके जो हाउसिंग सोसाइटी है उसमें जो सेक्रेटरी है, they are also public servant. You can trap them also. You please read section 21 of the Indian Penal Code who are public servant. वो सारे लोगों के नाम है उसमें. इवन एजुकेशनल में जिसको एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो लोग पैसा लेते हैं, द गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, दे आर नॉट सपोज टू टेक डोनेशन. दे कैन बी ट्रैप्ड. वी आर ट्रैप्ड. Can I make a complaint against an ex-Nagar Sevak against his disproportionate assets? He's having 8 to 10 costly cars and houses and all that thing. Very good. He should complain against all Nagar Sevak, not one. all are none. No exception. I must tell you this, that in his whole career in the Anti-Corruption Bureau, he had basically got 500 people trapped, officials, out of which In 2003, it is the average trap is per year 50 to 60. In 2003, we have trapped 96 government servants. So my interview was taken by that in Bombay channel. बोले साहब आप सेंचुरी मारने वाले थे. मतलब मैं सचिन तेंदुलकर नहीं है. और 96 कंप्लेंट आए, उन लोगों को हम कंप्लेंट वेरीफाई किया, those were trapped. what is interesting is out of the 500, 200 were police officials and 100 were BMC. So it's creditable that a police officer has trapped his own biradari, as we call it. I don't call his own biradari. The policemen in uniform, if they are acting like a criminal, they are criminally in uniform. They are not policemen.
and we have cleaned the force. This is like interesting question, sir. Society collected cash for paying bribes to government officials for deemed conveyance. It is recorded in the minutes. Money is not in the accounts of the society. Can this be under section 12? Correct. Offering bribe is off in section 12 of the PC Act. And that if that fellow to whom money is given, if he is demanding, then you trap him. Sir, at the police station, if the officer asks the complainant to bring stationery for office purposes, can it be stated as a bribe? Yes. What should we do? Section 11, valuable thing, anything. If the amount demanded is less than 250, then there are judgment, High Court judgment, 4 judgments. The matter should be sent to the department inquiry and they should not be prosecuted. No sanction should be granted. Amount must be more than 250. This is a very peculiar question that in case of this proportionate asset, sometimes it is done in Benami cases. So how do you really अभी go? एक एग्जांपल लेता हूँ मैं रत्नागिरी में एक आदमी ने एक तलाटी के ऊपर एलिगेशन है कि he has purchased a boat of ₹2 lakhs which was in the name of his brother बेनामी भाई को बोला है भैया 2 लाख का तुम बोट लिया पैसा किधर से है बोला भाई ने दिया तो दैट इज मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसके नाम पे प्रॉपर्टी वेदर ही इज कैपेबल टू परचेज दोस्त अभी मैं दूसरा ये आपको बताया वो केस में बताया नहीं एक Sure. बताएगा एक सीनियर इंस्पेक्टर था he was trapped while accepting bribe of ₹25,000 and 1 liquor bottle. Then his house search was conducted. The property was in the name of boys, girls, wives. Boy age was 12 years and he was shown owner of a security agency. As per law, below 18, he can't be the owner of the company. So obviously the money was a public servant, it's a bribe amount. If you act as a whistleblower, do you stand eligible for some rewards out of the money confiscated? In disproportionate asset case, after Arab Patil sahab, 10 years ago that procedure was started, rewards are given and your name will be kept secret. It depends upon custom type नहीं है 20% 10% ऐसा नहीं. Why is the conviction rate low in corruption cases? I will tell one incident for that. After one boy was आपकी the story बोला 4 boys were going to national park in a car. There was an accident at highway. So highway accident होने का तो 1 2 3 4 5 6 bang on each other. One police officer was riding scooter. He was also banged. Then he caught those 4 boys. बोले I will register a case of attempt to commit murder. That boy was taken to police station and then demand was made. His car was kept there and demand of 10,000 was made. Then next day we have trapped that fellow. Tight case was was registered, investigated. Sufficient evidence was there. Before trial, one day early, the police officer along with his wife went to the house of complainant. The complainant's wife told officer's wife, public servant's wife, ये 4 साल से ये सस्पेंड है, अभी वो हम 7 दिन से खाना भी नहीं खाया है और तुम्हारा आदमी ने इनको पकड़ा है, अभी हमारी सब जिंदगी उसके हाथ में, कल वो एविडेंस देने वाला है. उसके वाइफ ने कंप्लेंट के दम दिया, अरे तुम क्यों ये इनका ये ऐसा सब लफड़ा किया है, कल कोर्ट में बोले मेरा कोई कंप्लेंट नहीं. एंड ही टर्न हॉस्टाइल एंड लाइक दैट. क्योंकि जो आप जब कंप्लेंट देते हो आपका जो गुस्सा रहता है ह्यूमन साइकोलॉजी आप बाद में भूल जाते. वो कंप्लेनेंट एज एक्यूज दे बिकम फ्रेंडली और पब्लिक जो दूसरा केस बढ़ा था आपको वर्ली पुलिस स्टेशन के जो सीनरी पे ही वॉज ट्रैप्ड होटल complainant was conducting a hotel. He was taking regular hafta. He demanded more hafta. The officer was trapped. और ट्रैप होने के बाद हम लोगों ने चार्जशीट भेजा. देन अदर पुलिस ऑफिसर अप्रोच, अरे वो तो गया बोले वो उसका तो रिटायर्ड होने वाला है
अगर आपको धंधा करने गए तो हम लोग आपको अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा करके प्रेशर डाला, वो कंप्लेंट बोला ठीक है उसने गुनाह किया था, ठीक है आप लोग मेरे को कोऑपरेट करो, नहीं बिकम हॉस्टाइल। तो लोग बाद में परस्यू नहीं करते, तो कंप्लेन हॉस्टाइल है। दूसरा पंच लेते गवर्नमेंट लोग, वो कभी हॉस्टाइल होते हैं, दे आर मैनेज्ड। फिर कोई टेक्निकल चीज़ रहती है, और ह्यूमन माइंड इनफेलिबल। अभी जज ने जजमेंट दिया तो इट इज नॉट नेसेसरी उसके ऊपर दूसरा जज है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अभी मैं आपको एक छोटा सा 1 मिनट में केस बताता हूँ। वन यंग बॉय ज्वाइन पुलिस फोर्स, ही वॉज सेंट फॉर ट्रेनिंग, 200 boys were taking training, 30 boys were all of a sudden asked to go home. The 30 boys started crying, अरे पुलिस वाला बन गया, हमारा सरकार होगा, इन्हें निकाला गया। The principal IPS officer asked 30,000 bribe rupees from each cadet. 29 boys went to their native place, their parents sold agriculture, their mother sold Mangalsutra. 29 boys paid the bribe. One boy approached to the MLA, सर मुझे पैसा दे दो और मैं आपका सैलरी से थोड़ा थोड़ा करके दूंगा। बोले क्यों पैसा देने का है? बोले हमारे प्रिंसिपल को देने का है, उसने निकाला हमको। बोले ठीक है प्रिंसिपल को अपन देते पैसा, नो पाउडर लगा दी। फिर एमएलए ने उसको सीएम के पास लेके गए, सीएम साहब ने हमारे डीजी को बुलाया, ट्रैप वॉज लेट, तो पुणे आणखी करप्शन, तो वी वर सेंट फ्रॉम पुणे बॉम्बे टू ले ट्रैप। हम लोगों ने एसपी को पकड़ा। देयर वर 30 विटनेसेस, हर एक का स्टेटमेंट लिया। 30 विटनेस, 30 लोग बोल रहे हैं कि हमको ऐसा निकाला, इतना पैसा दिया हम लोगों ने। जब ये हम लोग ट्रैप करने को गए गणपति डे से, इंस्पेक्टर के पास पैसा देने का था, इंस्पेक्टर अंदर बैठा था, वो पैसा हमारा कंप्लेंट जाके दिया। बाहर आके उसने, कैंप था वो, बाहर आके वो सिग्नल दिया उसने झाड़ पे ऐसा बैटरी का, मैं दरवाजे में जाके खड़ा हो गया। तो ये दिस इंस्पेक्टर वॉज काउंटिंग मनी, लास्ट जिसका बच्चे का पैसा था। और वाइल्ड काउंटिंग, मतलब सर क्या कर रहा है? बोले अरे 29 लोगों ने पैसा वापिस दिया, या भी यही बचा था। फिर वो पैसा रखा, वो टिक किया। फिर मुझे बोला आप कौन? मैंने मैं एंटी करप्शन। वो इंस्पेक्टर उधर ही बेहोश हो गया। 10 मिनट हम लोगों ने उसको मसाज करके रिवाइव किया, चार्जशीट भेजा। ही वॉज कन्विक्टेड बाय सेशन कोर्ट, ही वॉज कन्विक्टेड बाय हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो बच्चे लोगों ने स्टेटमेंट दिया है उसके ऊपर सिग्नेचर था, तो इट अपेयर देयर द स्टेटमेंट्स वर टेकन अंडर इंड्यूस एंड प्रेशर, टेक्निकल पॉइंट पे छोड़ दिया उसको। ऐसा है, इट डिपेंड अपॉन जजेस ऑल्सो। अभी दूसरा एक जज का मैं इंसिडेंट बताता हूँ, प्राइवेट रखना, रिपोर्टर ने कोई तो। ये करप्शन बंद करने के लिए मैडम का बहुत ये था, बोले अपन ये करप्शन कैसा भी करके ये बंद करने का। तो मैडम ने हमारी जो बड़ी गाड़ी थी उसको कलर लगा के डोंट पे ब्राइब ये सब नंबर विंबर लिखे, और हम लोगों ने ओल्ड कस्टम और सेल टैक्स ऑफिस तो सब लगा दी गाड़ी। तो पहले जब दिन ओल्ड कस्टम के पास गाड़ी लगाई, वो दिन किसको भी नोबडी टुक ब्राइब, बोले फिल्डिंग लगाए, एंटी करप्शन गाड़ी लगाए। तो गाड़ी में कौन था? ड्राइवर और हमारा सिपाही पम्पलेट देने को। दे वर नॉट हैविंग पावर टू ट्रैप, लेकिन दैट फियर वाज क्रिएटेड और मनी वाज नॉट पेड। तो मैडम ने बोला खाली इतना अपन काम करते, कंप्लेंट आता नहीं, खाली 50-60 लोग आते, और इस कोर्ट में से ट्रैप होने के बाद वो छूट जाते, कोई सजा तो होना चाहिए। सजा भी 1 साल 2 साल, विल गो टू द कोर्ट। फिर मैं और मैडम जज को जाके मिले, मतलब सर यू हैव टू कंट्रोल दिस। और एक आदमी ट्रैप होकर वापस ट्रैप हो गया, एक आदमी 3 बार ट्रैप हुआ, मतलब उसके भी डिटरमिन मैसेज शुड गो। बोले ओके मेरे पास अभी कल जजमेंट है, देखो अभी मैं डिटरमिन एक्शन लेता हूँ। बोले आपके पास रखना सीक्रेट है, मतलब ठीक है सर। दूसरे दिन एक जजमेंट था, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर का दिया है, ट्रैप केस था। तो हर टाइम 1 साल 2 साल, उसको 7 साल की सजा दी। पीडब्ल्यू इंजीनियर, मंत्रालय हिल गया एकदम। 1 हफ्ते के बाद जज ट्रांसफर टू संगमनेर डिस्ट्रिक्ट। ऐसा है Sir, how does one complain against a staff of anti-corruption bureau in demanding a bribe? अगर एंटी करप्शन का कोई भी ब्राइब डिमांड कर रहा है तो आपके पास मोबाइल है, रिकॉर्ड करो। एक सांताक्रूज का एक कंप्लेनेंट है, उसने एंटी करप्शन ऑफिस में जाके जब ऑफिसर पैसा मांग रहा था उसने वीडियो किया उसका और डीजी को दिखाया। डीजी ने ऑफिसर को तुरंत सस्पेंड किया और भेज दिया। तो ये जो एक्टिविस्ट है वो भी सांताक्रूज का है,
उसने डीजी को बोला कि मैंने तुमको एविडेंस दिया, वाई डिड नॉट रजिस्टर अ ट्रैप केस। तो डीजी ने उसको समझाया, देखो अगर एंटीग्रेशन ऑफिसर को ट्रैप किया तो हमारे पास आएगा नहीं कोई कंप्लेन, हमने उसको सजा दिया। दिस इज हाउ मैटर वाज एंडेड अप। All the politicians are prosecuted in disappropriate assets case, then how are they subsequently released? नहीं, अबाउट रिलीज इज देयर राइट्स, वेलेबल ऑफेंस है, बाद में रिलीज होते हैं, ऐसा आदमी नहीं। इन मर्डर केस में 1973 को कोई जामीन नहीं था, दत्ता सामंत द फर्स्ट केस की जामीन हो गई। अर्लियर डेज कोर्ट से स्ट्रिक्ट, बाद में अभी मर्डर किया तो 7 दिन में जामीन मिलती, छोड़ने का सब कोर्ट के हाथ में है। This is a question. Do you have guidance cell where a person can come for one-to-one meeting for further help? We already announced that Moneylife Foundation is working out on a clinic to help with Mr. Tupe. So wait for that schedule. But otherwise, Mr. Tupe is always available on court in case you want to consult him. But the Moneylife Foundation will have a clinic very shortly where Mr. Tupe will be available for personal counseling. मैं एंटीग्रेशन में PI था, ACP था, DCP था, बट आई ऑल्सो फेस्ड मेनी एलिगेशंस। अभी आपको एक स्मॉल इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं। एक असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर हम लोगों ने DPA केस किया था। DPA केस करने के बाद प्रोसीजर क्या है, उसका प्रॉपर्टी अटैच करने का होता है। इन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट टिल टुडे देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी क्रिमिनल लॉ ऑर्डिनेंस में सेक्शन 310 उसके अंदर होता है। प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड है, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट का प्रॉपर्टी अटैच करने का है तो IO हैज़ टू मेक एप्लीकेशन टू द गवर्नमेंट कि ये इसका प्रॉपर्टी इतना है, मुझे परमिशन दो टू फाइल कंप्लेंट इन स्मॉल कॉज कोर्ट। फिर गवर्नमेंट वो ऑफिसर को ऑथराइजेशन देती, नोटिफिकेशन निकालती। बाद में मैं स्मॉल कॉज कोर्ट में जाके एप्लीकेशन करता हूँ कि ये पब्लिक सर्वेंट है, उसका इतना प्रॉपर्टी अटैच करने का मुझे अटैच करने का है। फिर स्मॉल कॉज कोर्ट वो पब्लिक सर्वेंट को नोटिस इशू करते कि तुम्हारे इतना प्रॉपर्टी है, वाई यू शुड नॉट बी अटैच। और बाद में कोर्ट में तारीख पे तारीख आज तक कुछ नहीं हुआ। मेरे 10 एप्लीकेशन आज भी पेंडिंग है। Now, not a single property is attached. We have a question from Mr. Kamlakar Shinoy. Can you stand, Kamlakar? Kamlakar is a fighter, is a whistleblower. Very good. Yeah. Congrats. Can Anti-Corruption Bureau conduct inquiry for months or years without registration of an FIR? And under which section of CRPC? The second question is under which section of CRPC the IO has to take permission for registration of FIR from the DCP or DCP anti-corruption? एंटी करप्शन का काम कैसे चलता है, आपको मैं बोला है कि डिस्क्रीट इंक्वायरी रहती है। डिस्क्रीट इंक्वायरी में आप सुन रहे हैं, डिस्क्रीट इंक्वायरी में ऑफेंस तो कंप्लीट नहीं है, ओनली एलिगेशंस आर देयर, बट प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज आर देयर। तो देयर इज अ प्रोविजन अंडर सेक्शन 157 CRPC वेयर अ पुलिस ऑफिसर कैन मेक प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या? Second question is... नहीं, उनका ही What was the second question, Kamlakar? Sir, under 157, the preliminary inquiry, the scope of preliminary inquiry is to see whether the information disclosed is an offence. But in anti-corruption, you conduct inquiries for 5 years, you call the accused, you call the witnesses, which is not empowered under 157. And that is what I am objecting today. I just met you today and came here. देयर इज अ एंटी करप्शन मैन्यूअल, उसमें पीरियड भी लिखा है। डिस्क्रीट इंक्वायरी मैक्सिमम 6 मंथ्स का पीरियड लिखा है। अगर 6 मंथ से ज़्यादा, क्योंकि क्या इन्फॉर्मेशन जो रहती है, आपके पास एसेट की इन्फॉर्मेशन है, उसके पे अलाउंस ये वो, उसके गांव में एग्रीकल्चरल इनकम जो भी है वो आने को कम से कम 1-2 साल लगते हैं। अनलेस एंटायर इन्फॉर्मेशन इज क्लब्ड दैट FIR ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड, इट टेक टाइम। अगर पब्लिक सर्वेंट बॉम्बे में उसका सारा प्रॉपर्टी इधर, तो दैट इंक्वायरी कैन बी फिनिश विद इन अ मंथ आल्सो, बिकॉज पब्लिक सर्वेंट बॉम्बे का ओरिजिनल आदमी कोई नहीं, सब लोग बाहर से आते हैं, फिर उनका घर उधर रहता है, उनका खेती उधर रहता है, उधर से फिर वो डिपार्टमेंट को लेटर लिखो, फिर वो इन्फॉर्मेशन देंगे इसका इतना खेती है, उसका इतना इनकम है, और डिस्प्रोपोर्शनेट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू। Whether police stations having ACs, TVs, which are not official purchases, come under Corruption Act? ACs ये वो CCTV तो ऑफिशियल है, और अबाउट AC एंड ऑल दैट
if somebody complained that this officer is using AC, you can complain to the commissioner of police, and commissioner of police will take his explanation. And if he could not give satisfaction, department inquiry can be held. He is not supposed to apply. जब एवं सिंह साहब थे 2002 में सबको गाड़ी दिया था, ये कौन सा व्हीकल्स वेयर गिवन टू द ऑल पुलिस ऑफिसर, उन्होंने वार्निंग दिया था अगर कोई ऑफिसर ने ये गाड़ी में एसी लगाया तो माइंड विल आई विल अरेस्ट यू. Also, Samir Javeri's second question is, anti-corruption Maharashtra has not registered an FIR from a complainant which is dated as old as 2nd June 2016 by one police constable with audio and video evidences. What are your views on this? ऑडियो वीडियो ट्रैप है क्या है? व्हाट इज चार्जेस, एलिगेशन क्या है? Yes, sir. This is the traffic police constable. In similar way which you have done, drive the truck in the Malad area. He paid the bribe to traffic constable. He did the video recording on mobile. Similar 26 incidents. And he made complaint to anti-corruption with that video CD. It is clearly visible that money exchange hands up. Correct. This is complaint copy. Correct. But what happened? FIR has not been registered, but traffic constable transferred to I the have other already told you, unless there is a demand, mere acceptance is not offense. There can be dealt by departmental inquiry. FIR cannot be registered. अभी थाना में कंप्लेंट आया था कि एक चेक नाका पे हमेशा ब्राइब, ऐसा एक कौन सा जंगल में एक चेक नाका में, आई डोंट नो द नेम, तो वहाँ के कांस्टेबल ब्राइब लेते. तो हमारे होम डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी था हम लोग के पास, हम लोगों ने वो जंगल में गए जिधर वो जंक्शन था, उधर पेड़ में हम लोगों ने कैमरे लगाए और 7 days वी हैव टेकन शूटिंग कि ट्रक आ रहा है, फिर ये पैसा निकल रहा है, डाल रहा है. फिर 7 दिन के बाद ये कांस्टेबल को बोला है कि आप लोग पैसा ले रहे हो. बोले हम नहीं पैसा ले रहे. फिर वो कैसेट दिखाया, फिर उन्होंने एडमिट किया. अभी दे कांट चैलेंज दी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस. बोले हाँ हम लोग लिया, गलती हो गया. Then that matter was referred to the department inquiry because nobody has lodged a complaint of demand of bribe. Our Supreme Court judgment is unless demand is there, you can't prosecute him. But this is a misconduct and this can be dealt by departmental. तो FIR लेंगे ना, वो डिपार्टमेंट इंक्वायरी होगा, उनको शिक्षा भी होगी. उल्टा हो गया, वो ट्रैफिक कांस्टेबल को साइड में पोस्टिंग कर दिया, वो पागल हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट, जिससे कंप्लेंट किया. हाँ नहीं बरोबर है. ट्रैफिक कांस्टेबल अगर गिल्टी है, he has to punish, you have to follow. अगर वो समझो कोई उसका फेवरेट ऑफिसर है, उसको पनिशमेंट नहीं करे, यू कैन गो टू द हायर ऑफिसर. अगर पुलिस सुनता नहीं, सब गवर्नमेंट सर्वेंट आपको लगता है करप्ट है, यू कैन गो टू द कोर्ट, यू हैव गॉट ऑप्शन, यू कैन फायर. Is corruption in the judiciary covered under this act? Yes. As per the section 21 IPC, even judges are also public servant. We have trapped one civil judge and he was convicted also for 2 years. Because the case appeared 4 years ago. There is always this fear expressed about what is the safety of the complainant's life after making a complaint. What do you have to say about that? According to the Prevention of Corruption Act, section 24, the complainant is always given protection. क्योंकि आप जब वो ट्रैप का कंप्लेंट करने को आता है, देन वो कंप्लेंट में बोलता है कि मैंने ये टाइम पे उसको पहले 10,000 दिया था, 5,000 दिया था. बट ही हैज़ कम फॉरवर्ड टू लॉज द कंप्लेंट एंड ही इज़ प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, कि उसके ऊपर वो पहले जो ब्राइब दी थी, ऑफरिंग का ब्राइब केस होना नहीं चाहिए. अगर उसको कोई डर है, देन ही कैन अप्रोच टू द कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड ही कैन टेक प्रोटेक्शन. Protection is a different issue. What is the difference between state ACB and CBI ACB? State ACB means all state employees who are paid salary etc. by state government. They are state employees. And CBI means only central government employees. MTNL, income tax, all central government employees. There, अगर मेरे पास आता है कोई और बोलता है कि मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर ने डिमांड किया आप FIR ले लो, मैं उसको लेंगा और सीधा CBI ऑफिस में टन्ना हाउस में जाके बोलेंगे आपका यूरोडिक्शन, आप एक ट्रैप केस ले लो, बिकॉज दे आर हैविंग पावर. बट इन महाराष्ट्र स्टेट, इन मोफिसिल, देर आर नो CBI यूनिट्स. CBI यूनिट्स ऑफिस आर नॉट देर. So temporarily the state ACB is trapping them and sending report to the CBI. If case is important, CBI takes investigation.
or CBI gives authority to the state, you investigate and send the papers, and they will ask for sanction and all that. If sanction is rejected by the competent authority, what is the further options that complainant has? If the sanction is rejected on valid ground, well, अगर कुछ loophole है sanction अगर refuse किया, then you have to again apply for review of this decision. If commissioner is not giving sanction, अगर उसका कोई खास आदमी है, तो he will not give sanction. Then you can go to the DG. There is always upper step. If DG is not giving, you go to the Home Minister. Home Minister is the head of the police. Do you encourage citizens to do private stings in police stations? I will encourage. You are having mobile, you record everything and show it. ये जो कंप्लेंट करने के लिए आपको एंटीकोशन गुने पे जर्ज नहीं है, पब्लिक फोरम अपना पब्लिक बूथ पे जाओ, वहाँ से आप कंप्लेंट कर सकते हैं. Disproportionate case, it need not be complainant. If you are apprehending that some reaction will be there, you send an anonymous application. Contents must be true. Evidence लगा दो. This is a small clip which is the ACB Maharashtra website, and it shows how you can file a complaint. They have a mobile application as well. So here, this is the address is acbmaharashtra.net. It is available in English and Marathi as well. So when you go to the online complaint, you can file complaint against bribe demand, disproportionate asset complaint, and misuse of power. So how each section works. This is the bribe demand complaint. You have to put your name, 10-digit mobile number and other details, the name of the public servant, his address and your address, your district, and you can submit the case online, complaint online. For the DPA case, the procedure is same, but you can also attach the evidence here. Name, then your mobile number, and you can use the attachment like Mr. Tupe has said, you can submit the video, audio, or whatever proof you have that you can submit. In misuse of power, you can file the same complaint in the same manner and also attach the evidence what you have. Mr. Tupe says you can collect the information using the RTI Act. So this is how the website and the mobile application works. When you submit your complaint, you get a verification on your mobile and also a acceptance that your complaint is accepted. And there are some question and answers FAQs on the website, so you can go through it and you'll come to know about the how the ACB works. This is available in Marathi as well, and same manner, same procedure is followed in Marathi also. These are all same forms, but only the language difference is there. This is the telephone number of Mumbai ACB. There is a toll-free number as well, and WhatsApp number is also there. Their website is, as I told you, acbmaharashtra.org, and email ID is acbwebmail@mahapolice.gov.in.